Hello, Namaste, Sasrikal, good evening. Welcome again to the Assistant Talk Show. I'm very happy today because we have very eminent guests here today. Without wasting any time, I'll introduce you to the very first guest, Dr. S.K. Rathore. And he is my favorite one because he is so down to earth and he's so gentle person that everybody likes him. Welcome, sir. About sir, because he doesn't needs any introduction, but still we will introduce him. That sir is MPhil and PhD in physics and MBA in marketing. He's the founder, chairman, and MD of Stanford Group of Schools. He was founding president of Early Childhood Care and Development Education Association, a voluntary organization working for the welfare of early learners, educators, and parents. He is vice president of Early Childhood Association and chairman, School Education Department Center for Education Growth and Research. He started his entrepreneurship journey in 1995 with a little capital, and today he is known as one of the most successful entrepreneur in school education. Sir is a well-known name in the field of early childhood education and is a regular speaker in major conferences and seminars on education and entrepreneurship in the country and abroad. He is decorated with the Entrepreneur of the Year and the Most Successful Educationist in Early Childhood Education Awards in the year 2016, Entrepreneur of the Year in the year 2017, and India's Greatest Leaders 2017-18. His success story is featured in major mainstream print media and on ABP News, and most recently, he is featured in a web series on ForbesIndia.com as Education Externalist of India. Recently, he is awarded as 50 Visionary Leading Icons in the Education 2020 by Education Today. We welcome you, sir. Although this is a very Thank you so small much. introduction, because one or two rows might be filled up with the awards for you, because you are everywhere. Your branches are everywhere. Only Kanpur was left with us, and we are very pleased that you are here in Kanpur also. And we you inspire us. You inspire us because earlier you also had been in the show and you told you about yourself how you started up. So we will like to know that how it came in your mind to start up preschools first, and how did you आपने कैसे इसको बढ़ाया और आगे बढ़ाते बढ़ाते ब्रांचेस को दी. Over to you, sir. Thank you so much, Mr. Chandok, for inviting me again. And this is an honor to share a screen with Manju ma'am, जिनसे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. और जब भी कहीं फंसते हैं तो सबसे पहला फोन मंजू मैम को ही करते हैं, मैम ये कैसे होगा. So this is an honor. So Mr. Chandok, see, I was in computer field earlier. I started my career as computer engineer, not software engineer, hardware engineer. And then I started my own entrepreneurship journey, starting computer repair, maintenance, and sales purchase business in 1995. My wife started first preschool in 1999, and 2008 I decided to leave my business and join my wife to expand the business of preschools, what she was doing fantastically good. So basically I don't started this preschool or school profession. My wife employed me to expand it. So I am the senior most employee of my wife's company. Behind a successful man, there is always the hand of a lady. So that Yes, is yes. surely either a mother or sister or wife. So that was like that. But sir, because of your support, I mean, how did it came into mind? कि now अब हमने एक branch खोल ली है, अपनी खोल ली है, तो now we should extend. Then we should have our more schools. Then we should go up with the franchisees. So what happened, Mr. Chandok, in 1995, when we planned to start a preschool for her in Noida, at that time preschool was not so popular. लोगों को पता ही नहीं था preschool क्या होता है और क्यों 2 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाए. At that time, even I admitted my daughter at the age of I think 3.5. तो उस टाइम पर लोगों को नहीं समझ था कि preschool क्या होता है और क्यों बच्चों को इतनी अर्ली एज में भेजा जाए. So we struggled a lot initially. I think it took 2 years of the time to come out at a point when we can meet out our expenses. You know, preschool में जबकि उतना ज़्यादा expenses नहीं होते हैं as compared to 10+2 school, but
वो एक्सपेंसेस मीट करने के लिए भी बहुत चैलेंज था, क्योंकि लोग भेजना ही नहीं चाहते थे अपने बच्चों को स्कूल में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने हर डोर को नॉक किया, बैल बजाई, एक लीफलेट देते थे, उनको बताते थे कि क्यों इस एज में बच्चे को भेजना जरूरी होता है। एंड ग्रेजुअली आवर स्कूल स्टार्टेड पिकिंग अप, एंड देन वी स्टार्टेड वन मोर स्कूल फॉर हर। तो 2 स्कूल हो गए। अब पेरेंट्स ने ही अपने आप बोलना शुरू किया कि मैडम एक स्कूल वहां खोल दो, वहां हमारे रिलेटिव रहते हैं, वहां कोई प्री स्कूल नहीं है। और हमने बताया तो वो बड़े एक्साइटेड हैं कि यहाँ अगर स्कूल खुलेगा तो हम बच्चे को भेजेंगे। देन इट टुक टाइम, ऐसा नहीं है कि ये 1 साल में ही हो गया होगा। तो देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रेंचाइजिंग, कि हम तो कितने स्कूल अपने खोलेंगे और कैसे मैनेज करेंगे। देन 2008 I decided to close down my computer business. What I was doing very fantastically good, but मुझे लगता था जब भी हम कहीं मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो मैडम को कोई ना कोई बच्चे के पेरेंट्स मिल जाते थे और बड़ी रेस्पेक्ट से बात करते थे। यहाँ स्कूल्स में क्या होता है कि एडमिशन लेने भी स्कूल पे चल के आएगा, कोई भी फीस देने भी यहीं पर आएगा, और आपसे अगर कोई कंप्लेन है वो भी यहीं करने आएगा, और आपको अप्रिशिएट करना है तो वो भी यहीं अप्रिशिएट करने आएगा। On the contrary, in my computer business, I have to go to the corporates to get the orders, then to supply the computers or services, then for the follow up the payments. तो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन था। तो मुझे लगा कि दिस इज बेटर बिजनेस एज कंपेयर टू माय अर्लियर बिजनेस। देन हमने डिसाइड किया कि अब हमें कुछ ब्रांड रजिस्टर कराना चाहिए, और we should start franchise it, because we have few number of parents who are ready to start with us. तो 2009 दिसंबर 20 नेक्स्ट मंथ हमें 12 साल होने वाले हैं सैनफोर्ड को लॉन्च किए हुए। 20 दिसंबर को हमने लॉन्च किया, और लॉन्च से पहले ही हमने फर्स्ट फ्रेंचाइजी साइन कर लिया था। 20 दिसंबर को सैनफोर्ड का पहला स्कूल लॉन्च हुआ, और हमारा फरवरी में दूसरा स्कूल लॉन्च हुआ। ऐसे हमारे 3-4 स्कूल ऐसे थे जो हमने पहले ही लाइन अप करके रखे होते। पेरेंट्स वर रेडी टू कम विद अस टू स्टार्ट देयर ऑन प्री स्कूल in our name. So this is the scenario मतलब because of which we came into franchising. That means sir, right now तो you are in the whole India at least, मतलब लगभग सारे states में आप पहुंच चुके हो। You are almost in every state. I think 20 to 23 states में तो हम लोग हैं। सारे इंडिया में तो अभी नहीं पहुंचे हैं, but we are into 20 to 23 states. So sir, I came to know that 250 schools plus schools you already have in the country you have. That's great, sir. Within a span of 12 years, and you have spread so many branches, it is very difficult. Within a span of 10 years, 2 साल से तो business हुआ ही नहीं। Right. हाँ, 2 साल से तो हुआ नहीं। Right, exactly. 2 साल से तो हुआ ही नहीं। In fact, उसमें बहुत losses हुए लोगों के प्री स्कूल में, तो खासकर से 2 साल में। And you started when people didn't know about the concept of preschools. The parents, they have in their minds that preschool you can send anywhere, and when it comes to class grade 1 onwards, you should go to a good school. But they don't know that this is the route. Preschool you should send to a very good school. From class 1 onwards, you can send it to any school, because the basic banta hai that develops in these 3-4 years only. So that concept you have created at that time, because I know very well, because at that time people only think that we should admit a child in a school जिसमें हम PG में डालें और 12th करके निकले सीधे। So the concept, the mental level had to be changed on the parents, which you have done, sir. That's all to you, because starting up with a series of preschool is very difficult. At that time it was very difficult, and now the competition has increased so much. So many preschools have come into existence, and being in the market and surviving with a different concept is also very important. You have to be very updated all the time. जो 2010 में आपने हाथ में चालू किया, आज उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें चल रही। आप साथ आप keep on seeing that whatever technologies and whatever differences you are bringing regularly every day, 24/7 into your schools. That is very remarkable. That is very interesting. That is why Stanford is moving into all the states almost, and by God's grace it will be in the whole India. जो भी रह गया जगह वहां पे भी बिल्कुल पहुंचेगा आपके efforts से, sir. So I wanted to tell you, Mr. Chandok, in last 10 years we revised our curriculum 3 times.
Great. इतना जल्दी कहीं पे भी नहीं होता. हमने हर ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 3 years वी रिवाइज आवर करिकुलम. एंड अभी पेंडेमिक में लास्ट ईयर, मतलब पिछले 6 महीने से हमने अपना पूरा का पूरा सिस्टम एनईपी के अकॉर्डिंग, सारी बुक्स डिजाइन होके, अब नई जो बुक्स हमारी एनईपी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एनईपी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया, बट वी हैव इम्प्लीमेंटेड. All the books are redesigned and all the curriculum is redesigned as per requirement of NEP. So if you want to be winner in the race, तो आपको जो है अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, अपने सिस्टम को 100%. अपडेटेड रखना. Whichever business it is, and Yes. of course you are very right, sir. Schooling work or business is much different, entirely different from the other business. Here you get respect. The most important thing is the respect. Respect. That is the most important thing about this profession. Again, it has gained reputation. Again, now people पहले सोचते थे नहीं टीचर नहीं बनेंगे. Now they think no, we should become teacher. People mentality has started changing now. That is for sure, sir. Thank you, sir, and welcome. And I will be also pleased if sometime you come to Kanpur also. हालांकि आपके लिए possible नहीं है. नहीं, आप जब बोलेंगे हम कानपुर आ जाएंगे. मैं मंजू मैम के पीछे पड़ जाऊंगा कि मंजू मैम आप बताओ कब कानपुर जा रही हो, चंडोक साहब को बोलते हैं, तभी बनाते हैं प्रोग्राम. That's great, sir. That's great. My pleasure, my honor. Thank you so much, sir. Welcome, sir. Manju ma'am, shall we come to you now? We welcome our next guest, Manju Rana ma'am. There's no introduction needed for her also, because when you are into the education field, Manju Rana ma'am is a very prominent name. Nobody might be like this, at least in Delhi, NCR at least, who is not knowing Manju Rana ma'am. Do you know Manju Rana ma'am? So he or she says, yes, I know her process long. So feel very confident when you are associated with such a great personality like Manju Rana ma'am. She had been a source of inspiration of many. Even me also. Ma'am, when I met you somewhere in 2009, I think, here in Kanpur in the Kant branch, so I was so much impressed by you that I wanted we to be over there with you in Ghaziabad. And you were needing a teacher at that time. You remember a teacher left over there, and you said that she has left. She came into DPS. Ma'am, you are muted. I said, yes, we were looking for one of the finest commerce teachers, and we met you. Right? Yes, ma'am. Yes. And ma'am, before meeting you, that your commerce teacher was there in DPS Dwarka for a workshop with us. She told me that I have just left Jaipuria. So when I came back the next second or third day, I was with you. So it was a coincidence when I came to know from her also, and you also teachers needed. But my bad luck that I didn't want to shift to Ghaziabad. Otherwise, my personality had been a little different as compared to now. But still, I'm very happy, ma'am, I'm associated with you. We'll give a little introduction of ma'am, although she doesn't need that. Ma'am is a national awardee. She's a seasoned and accomplished educator, dynamic communicator, effective administrator, and self-motivated individual with a career spanning of over 30 years. A natural leader, Ma'am Rana vision is to impart holistic, global, benchmark experiential learning supplemented with sports and art integrated co-curricular education. She has invested her opulent teaching and administrative experience to promote the CBSE affiliated Seth Anand Japuria group of educational institutions. Her effectual leadership as principal cum director in Seth Anand Japuria School, Vasundhara had given 5 national toppers in CBSE board examination for 2 consecutive years, that is 2018 and 19, and positioned the institution among the top leading schools nationally. As an avid educationist, she has spearheaded the domain of creating an ecological environment, and her initiatives have led the Jaipuria schools to be recognized as top green schools. She has been awarded numerous prestigious awards like Dronacharya Award by HRIT, the Pranavaran Mitra Pushkar by the Union Ministry of Environment and Forest Government of India Award for commendable work in the area of human rights and social equality by CBSE, to name a few. I know, ma'am, because I've seen your office that so many awards are there. I think two, 3 rooms might be there for putting up the awards.
Ma'am had been also the city coordinator who had shouldered the responsibility of monitoring many other CBSE schools with aplomb. Currently, she is the secretary of Southern Schools Complex Ghaziabad Zone, and she holds a position of repute as a member of diverse educational bodies in Delhi NCR. We welcome you, ma'am. And I remember, I think when this school started, after 2, 3, or 4 years, you came over there in Vasundhara branch. I think Dinkar Singh sir went from here in the starting, if I'm not wrong, in 2002, I suppose. So after that, when you took up the charge, and we know in Ghaziabad, my many relatives, children also have studied over there, and I came to know that you closed the admissions. There's a cutthroat competition. Hundreds of schools are there in Ghaziabad, but when you talk about State Anandam Japuria under the leadership of Manjurana ma'am, so admissions do close after some time. It's very difficult to get there. This was only the reputation of Japuria and Kanpur, but the same reputation with much more reputation it has gained just because of you, ma'am. Thank you so much, ma'am, and welcome. We'd like to know about the previous before Japuria, ma'am. How did you started up with your career as an educationist, and how did you came into Japuria? So, well, first of all, thank you so much for having me over on SS Chandok's talk show. And it is a huge honor to share the platform with Mr. S.K. Rathore, somebody who is very, very close to my heart. And I'm a simple teacher. He's an entrepreneur. So, I think you have taken a good blend today for your talk show. I grew up in a small town in Bareilly, and yeah, I mean, I always wanted to be a research scholar at that point of time. But when my father shifted to Ghaziabad, I took B.Ed, and then joined a missionary school because we all grew up in a missionary school. So I joined a missionary school, Holy Child in Ghaziabad. Then I went to APJ Noida for some time, and then DAV and DPS Meerut Road. And my longest tenure was in Amity International School, Noida. And from there, in 2004, I got this opportunity to start this school in Vasundhara. So Dinkar sir came later. I joined as a vice principal, and I was the one who started the school from scratch. And 2 years later, Dinkar sir joined from Kanpur school. He had retired from Kanpur school and he came here, and I had the privilege to work under him for 2 years. And then, of course, I became the principal, then the principal cum director of the institution. So when the institution grew, I also grew with the institution. And now, of course, I'm director of schools, looking after all the schools, all the verticals that come under the Japuria group of educational institutions. So that has been my journey of about last 30 years. That's great, ma'am. That's great, ma'am. And I also had been seeing you from last 15 years, how the school had grown under you, because I had been following Japuria since its inception, because I started from St. Aloysius. So Japuria was quite close to my heart. I had met with Dinkar sir also. He wanted to appoint me in 2002 somewhere in his school, because commerce had been removed for 7, 8 years, and again it came back. So then I came to know that Dinkar Singh sir went to Ghaziabad for the new school. But under your leadership, ma'am, it has grown. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Next, we'll come up to Mr. Mayank Jain. Mr. Mayank Jain, about him, talking about him is he is a very young entrepreneur who is come into the field of the education. He himself will tell how he has come into entrepreneurship and how he has come into this business, which he call his brand as Easy Schooling. Mayank, he has obtained a degree of BTech from one of the most prestigious college in India, that is DCE. While in college, he founded a platform called Easy Schooling that would go on to become the largest admission platform in Delhi NCR. He has helped 10,000 plus parents, I think it is now 20,000 plus parents, in their admissions journey through his Zoom sessions. He has also viewed 10,000s of schools visited, and consulted and guided them on how to boost admissions. He knew the ins and outs of his field like no one else. Actually, when I met him and I had a word with him as an entrepreneur,
So I just wanted to know the concept that whatever he has started in easy schooling, what is that? So he told me a story that something happened in his life that he saw that there is a gap between the parents and the school. The parents are not able to communicate properly with the schools, and the schools are not able to communicate properly with the parents. So there's a misconception or miscommunication with the parents, which he wanted to remove. Rest he'll tell himself. Thanks a And lot. ma'am, welcome to the show. And please let us know that how it came into your mind. I think you told me after plus two, class 12, it came into your mind that I want to start this. So what is the concept of easy schooling, please? Thanks a lot, Chandok sir, for inviting me. And I am so grateful and proud to be with Rathod sir and Manjurana ma'am. So these are the people whom I am inspired by from the beginning. And Rathod sir especially. So I follow him. I am following him from past 3 years, and I see. So जो उन्होंने जर्नी बताई, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा, एंड द ब्रांड दैट Stanford carries now. So I think it's a dream, and जो सर ने बोला कि corporate में you have to always go, and in school everybody is coming to you. So I also want to start a school very soon. So that's the dream that I have. Like I also want to start a school very soon in 2 to 3 years. So really grateful to have, and like Manju. And then take franchisee from Manju ma'am or me only. If you are not planning to start your own brand. That's a good one. That's a good one. I like We it. won't allow you any other brand. Ma'am, Yes. we should sell ourselves everywhere, no? Absolutely. I agree with you completely. Absolutely. So State Anandram Jaipuri is also like a wonderful brand, and I think Ghaziabad mein to every parent is like, so whenever I have Zoom sessions with all the admission seeking parents, they told me कि यार मैं किसी तरह ना State Anandram Jaipuria में मेरा admission करा दो और कुछ भी करा के करा दो मेरा. मैंने कहा सर ऐसे admissions नहीं होता है. So this is so great to have both of you. And I am a speaker over here. So how I started up was my elder brother was looking for schools for his child. So he was moving from one school to another, one website to the. He was not able to know कि कौन से स्कूल में अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ. एंड आजकल हर स्कूल मार्केटिंग करने लगा है. तो एक मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा मार्केट में होने लगा है. To ensure that कि सब कुछ facts right रहे पेरेंट्स के सामने, and they are able to choose the right school for their child, rather than कि शर्मा जी के लड़के ने स्कूल में एडमिशन कराया है तो हम भी उस स्कूल में एडमिशन कराएंगे. तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ होना चाहिए, rather than शर्मा जी के लड़के के पीछे हम जाएं. So this is what I wanted to start now with Proud. Yesterday only we announced our pre-seed, like the seed round. So we have raised funds from some big VCs around the world, and we are like helping a lot of schools to accept online application for admissions through our platform. So this is what I am doing right now. So really great to be here and listen from both of you and learn a lot today. So Mayank, it's a very good platform. I need to tell you that because you know it's easy for the parent to go to one common platform, Right. and get all the information from one common platform. Absolutely. You know, so instead of moving from one school to another for various facilities and infrastructure, it's wonderful, you know, that they get everything, you know, for an easy schooling, if I can say that. Yeah. Thanks a lot. And ma'am, it came into my mind also when I have word with him that he has a very good concept. That is why I have welcomed him, that you should come in our shows and you should tell about this. Sure. And like when we used to go for railway reservation, we used to send someone to line mein lag ke aao and you get the reservation done. Then we had mediators who used to take some extra money and get the thing done. Now we are doing it through mobile. It is happening with the online shopping also. Yes. So the trend is coming towards this in the big cities, that the parents, if they are moving to 4 or 5 schools for filling up the forms and admissions, and they are not able to see the school or get the good idea of that. So this platform, Yeah. I also complimented him that within 3-4 years or 5 years in whole India, the concept will be like this. कि कोई भी स्कूल में जाके एडमिशन के लिए नहीं जाएगा. They will go into the websites like Easy Schooling, and they will, if suppose they want to have admission in Ghaziabad, so when they'll click to Ghaziabad, so they'll find out all the schools of Ghaziabad. There they can see the features of all the schools, and there they can decide. आप LED खरीदने जाते हो किसी शॉप पे, within 1 hour you cannot decide the features. You can't compare the features. But sitting at home, you can compare all the features of all the schools, which are affordable according to your pocket, what are facilities you are needing. So that came into my mind. I welcomed him that he should come into the show and tell us what actually is your easy schooling.
because we are on this side of education field. You are in the marketing of the education, and he is bridging up the gap between the the schools Absolutely. and the parents. So this is the Absolutely. best thing I liked about him. And being because when I met him, so I think he's not more than 24 or 25. I said, when did you started? क्या स्कूल में आते तुमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था क्या? तो he told me that Mhm. after class 12th I started up this because I wanted that this harassment has happened with my brother and my family. So the parent should, he has his father business also. He didn't join that, but he came into this that I want to start up a new thing which would help the parents and the schools. Yeah. And we all of us are wishing him good luck that you should have a great success, and you should help all the schools also and the fame also. Thanks a lot, sir. Thank you. Well, welcome. Next, I'll come to sir. Okay, by the time sir come, I'll come to Manju Rana ma'am. Manju ma'am, everybody wants to become a teacher. Somebody says that कुछ नहीं बन पाए चलो teacher बन जाते हैं, and but they are not good teachers. So what do you think? What should be the qualities of a good teacher or a good administrator? Well, that's a tricky one to kind of answer, and I could see the difference. The kind of old experienced teachers that we have are extremely patient, and where they have huge empathy towards, and they don't take teaching as their job. They take it as their passion, and I think that is what is needed when you are looking for a job of a teacher. And but I can say that since education has brought in so much of dynamism, a lot of things are changing, so it's good to welcome the young crowd also. We have Rathore sir's daughter Sneha, and when he's talking about that the changes, curriculum is changing, the books are aligned with NEP. I mean, these are all thoughts of young children who are technology driven. So I think it is very important for me, for a teacher, is to always, strive and drive herself for self-improvement. अगर teachers अपने आप को self-improve नहीं करेंगी, तो हम कुछ भी लेकर आ जाएं, कितना भी अच्छा curriculum लेके आ जाएं, implementation will always be a huge issue. Another thing, that now it's a time also, NEP also says, and it's time that we need to connect education with the real world learning. कि हमने ये नहीं है कि हमको सिर्फ knowledge और understanding चाहिए. Now it's time for application, creativity, and how you can, whatever you have learned, how you can implement into a real world. And of course, it's time for communication and collaboration. And I think pandemic has taught us one thing, that there is no place for rigid people. There is no place for rigid teachers. The teachers who are rigid, are slowly and gradually been brought out of the system, because in pandemic, the teachers who were swift and quick in shifting from online classes, from offline to online, they were the one who survived. The teachers who were able to learn new technology, learn new tools, bring in creativity they were the ones who were loved by their teachers. So I think adaptability is extremely important for the teachers. Of course, passion has to be there. So if we get this wonderful combination of passion and creativity and adaptability, I think I feel there's a huge future for teachers. And now, of course, earlier, of course, the teachers were not so well paid. But now the good schools are paying good salary to the teachers, 7th pay commission. So I think a lot of good minds are now coming into school. And if you talk about an administrator, because you asked me what are the qualities of a good teacher and a good administrator. So yes, I mean, what I mentioned were, of course, for the teachers. And if you're looking for an administrator, through my experience, I feel that it's about team building. It took me 10 years to 17 years to build the brand for Jaipuria at Vasundhara. And I as a team lead, I can't take the entire credit to myself. This entire credit goes to my teachers. And so, but as an administrator, it's very important to have a clarity, where you want, what do you want,
where do you want to take your school? So unless you don't have a clarity where you want to take your school, then it becomes very, very difficult. And I think Rathod ji will completely agree with me, because he has opened schools in so many states. It is very, very important that the schools wherever we open, there should be customer orientation. हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्कूल खोल रहे हैं, किस तरह का करिकुलम वहाँ चलेगा, किस तरह का हमारा बच्चा है. And I think leader should be not a transactional leader. आज का टाइम नहीं है transactional leader का कि वो बस जाए और routine का काम करे. We are looking for a transformational leader who can bring about that change, even in herself as well as within the system. So yeah, that's what my thought would be. I second with the thought, ma'am, because education has become different now. If you are not dynamic, you're not changing according to the environment, you won't be able to survive in the market. Absolutely. And ma'am, students also, they have become very smart. When we were studying, so we had a fear of the teacher. Because of fear, we should respect the teachers. But now the kids are very smart. You cannot fool them. So now even the teachers come and say us that we are still respecting our teachers, but these students don't respect the teachers. So I do tell them, as you already be knowing, that you do not get respect. You have to earn your respect. Or you are giving to them, they will give you full respect. If you are not giving to them, they will not give you, they'll show you the way out of the school. That is for sure. So you need to be very dynamic and changing according to the environment. And you rightly said, ma'am, that which place you belong to. You're belonging to a big city, or you're belonging to you're opening a school in a remote area. So things cannot be the same at all the places, which I also had felt when I had been working with the different places, even with the Jaipuri also, when I was in this Hamirpur. So the things were different as compared to the Ghaziabad and other places also. So things are entirely different. You have to work according to the environment. Yeah. Thank you, ma'am. Rathod sir, I'll come up to you. Sir, many people, they have started up with the preschools, or they are trying to open with the preschools. उनको लगता है कि उनके पास थोड़ी सी जगह है स्कूल खोल ले. So tell us about these people, that those who want to start up with the schools, or they have started with the schools, it is not very easy. What tips they should know that while starting up their preschools? Yeah. So the kind of mushrooming of preschool happened in last several years, maybe in last 5 years, because everybody look for the school who is doing best in their area. कि वहाँ 200 बच्चा है, and the kind of money that school is making is attracting other people to start a school in the locality, but the kind of effort that particular school is putting in, he don't know or she don't know. So preschool is not a very easy business. I tell you, running a preschool is not so easy what it seems from the outside. Because one thing, the child is so small, child is so young, you need to understand his or her needs basically. आपको उनके लेवल पे नीचे उतरना पड़ेगा. We need to come down to their level. हमें उनके तरह से सोचना पड़ेगा, उनके तरह से वो कैसे सोचते हैं, 3 साल का बच्चा कैसे सोचता है, 3 साल के बच्चे को कैसे समझ आती है, 3 साल के बच्चे की नीड क्या होती है, और 3 साल के बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है. हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि जब हम छोटे थे तो हम कैसे चीजों को टेकअप करते थे. यू राइटली सेड, टुडेज जनरेशन इज वेरी स्मार्ट. और अभी जनरेशन गैप, जो हम पहले जनरेशन गैप कहते थे, जो मेरे स्नेहा और अभिषेक के बीच में है, या मंजू मैम और यामिनी के बीच में है, वो जनरेशन गैप नहीं है. अभी जनरेशन गैप हर 5 साल 3 साल की जनरेशन के बीच में यू विल फाइंड द गैप. जो 3 साल बाद जो जनरेशन आ रही है, 4 साल बाद जो जनरेशन आ रही है, वो पहली वाली जनरेशन से बहुत एडवांस है, बहुत स्मार्ट है. ठीक है, तो हमें उनके तरह से सोच के नीचे आना पड़ेगा. और हमारे केस में जितने भी स्कूल वाले लोग हैं, चाहे मंजू मैम है या मैं हूं, एवरीबडी in our case we have 2 different people. One is consumer, one is customer. Our customer is parent, so we need to satisfy the customer, and our consumer is child, so we need to satisfy the child also. In all other professions only consumer and customer are same, but in case of
educational institutions, customer and consumer are separate. So हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पर, मंजू मैम ने बहुत ही ठीक बात कही कि हमें टेरिटरी वाइज, एरिया वाइज, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और मेट्रोज कहाँ हम स्कूल खोल रहे हैं. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. वी स्टार्टेड one branch, franchise branch obviously, in a very small village, just 80-90 kilometers from Delhi, in Bagpat district. And Manju ma'am, I am so happy to tell you that school got nearly 100 admission in 2 months already. Oh, that's wonderful. एक प्ले स्कूल जो कि एक गांव में शुरू हुआ, जहां पर कि स्कूल भी अच्छे नहीं होते, वहां एक प्ले स्कूल शुरू किया हम लोगों ने. एंड आई वाज अफ्रेड, जब वो लेने आए हमसे फ्रेंचाइजी, मैंने कहा यार वहां छपरौली में कौन इस प्ले स्कूल में भेजेगा बच्चे को. तो कहता नहीं नहीं सर आप मुझे फ्रेंचाइजी दे दो. मैंने कहा आप बाद में आके मेरे पास रोना नहीं कि नहीं चल रहा है. कहता नहीं नहीं सर मैं चला लूंगा. दोनों हस्बैंड वाइफ आर सो grounded and connected with the people of the village कि उन्होंने within 2 months जब वो आए, कहते सर 80+ बच्चा हो गया हमारे, और अभी उन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया प्राइमरी के लिए. तो आपको ग्राउंड लेवल वर्क करना पड़ेगा, बच्चे की साइकी समझनी पड़ेगी, बच्चे को कैसे अंडरस्टैंड कराया जाएगा वहां पर, और पेरेंट्स की साइकी समझनी पड़ेगी, पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा. तो प्री स्कूल शुरू करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द लोकेलिटी वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्री स्कूल. व्हाट काइंड ऑफ locality, what kind of population is there. I tell you, we initially we also didn't had any experience, so we started our one preschool in, you know, Manju ma'am, Koshambi में हमने एक play school शुरू किया initially. जी. And Koshambi in Ghaziabad only, and that in that area all the senior citizens are residing in all those grave towers. हाँ जी. हमने तो सोचा कि यहाँ पे इतनी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन वो हमारी ब्रांच फेल हुई. देन वी शिफ्टेड इट टू सम अदर प्लेस, क्योंकि वहां पर वो 30 साल पुरानी सोसाइटीज थी, 40 साल पुरानी सोसाइटीज थी. वहां सारे सीनियर सिटीजन्स रहते थे, उनके बच्चे वहां से मूव आउट करके कोई बैंगलोर रह रहा है, कोई डिफेंस में चला गया है, कोई मुंबई रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है. तो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है कि जहां पर आप प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं वहां पर यंग कपल्स की पॉपुलेशन होनी बहुत जरूरी है. वन थिंग. सेकेंड थिंग, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन यू विल बी फेसिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. किस तरह का आप अपने आप को कहां प्लेस करना चाहते हैं. आप अपने आप को प्रीमियम सेगमेंट में प्लेस करना चाहते हैं, मिडिल में करना चाहते हैं, या बिल्कुल नीचे वाले सेगमेंट में रखना चाहते हैं. अकॉर्डिंगली यू हैव टू क्रिएट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, अकॉर्डिंगली यू हैव टू हैव गुड करिकुलम, अकॉर्डिंगली यू हैव टू हैव गुड टीचर्स, एंड ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. इनिशियली यू हैव टू डू गुड मार्केटिंग ऑल्सो. मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले स्कूल्स मार्केटिंग नहीं करते थे, जैसे आपने शुरू में कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में ही. मार्केटिंग इज द की ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस. आज के डेट में किसी भी बिजनेस को टेक ऑफ करने के लिए मार्केटिंग इज द बिग टूल. और सोशल मीडिया मार्केटिंग आज की डेट में, ये पैंडेमिक के टाइम में समझ आ गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द ओनली मार्केटिंग विच विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स. तो मार्केटिंग कैसे की जाए ये समझना बहुत जरूरी है. पेरेंट्स के साथ कनेक्ट बना के रखना इन प्री स्कूल. 10+2 स्कूल में पेरेंट पीटीएम में आता है. 10+2 स्कूल में पेरेंट को आप इन बिटवीन नहीं भी बुलाओगे तो शायद वो अपने आप ना आए अगर उसकी कोई नीड नहीं है. बट प्ले स्कूल में पेरेंट डेली फोन करके पूछता है मेरे बच्चे ने कुछ खाया आज के नहीं खाया, मेरे बच्चे ने कपड़े तो खराब नहीं किए थे सुसु पॉटी करके. और n number of question you have to face for the from the parents who are first time parents. इनका सेकंड चाइल्ड है, शायद वहां से क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम पेरेंट है, मैडम रोया तो नहीं था मेरा बच्चा. दिस इज अ वेरी जनरल फिनोमेना. व्हेनेवर द चाइल्ड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स, आज की डेट में मैं कहूंगा 70% ऑफ द चिल्ड्रन रोएंगे 2-4 दिन. पहले 100% रोते थे, हमारे टाइम में तो रोते ही थे. हम तो चाहे फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन में तब भी रोके गए थे. अभी पीछे ये घटता जा रहा है. लेकिन अभी बच्चे जो आ रहे हैं, अभी जो बच्चे एडमिशन आ रहे हैं आफ्टर द पैंडेमिक, उनमें से कोई एक आधी बच्चा रो रहा है, वो परेशान हो गए घर में बंद हुए हुए. उन्हें लग रहा है कि चलो घर से बाहर तो निकले हैं. तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू लुक इनटू बिफोर ओपनिंग ए प्री स्कूल.
पेरेंट्स के साथ कनेक्ट, छोटे छोटे सी चीजों में आप छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करेंगे, पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स के साथ जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होगा, एंड आई टेल यू इन माय फर्स्ट ब्रांच वेयर आई एम सिटिंग नाउ, जहाँ मेरा ऑफिस भी है वसुंधरा में, जहाँ मंजू मैम का भी स्कूल है, वहां पर सैनफोर्ड तो ब्रांड है, लेकिन उससे बड़ा ब्रांड कविता राठौर है जो मेरी वाइफ है, यहाँ उनका कनेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ सैनफोर्ड के नाम पे एडमिशन आए ना आए, उनके नाम पर एडमिशन आते हैं। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव टू बिल्ड विद द पेरेंट्स, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। Person relations, person relations, Yes. person relation. You're absolutely right, sir, because pre-school parents are quite concerned. पहली बात तो उनका तो फर्स्ट बच्चा होता है, इसलिए दे आर क्वाइट कंसर्न, आई मेरा बच्चा ने खाना खाया नहीं खाया, पॉटी तो नहीं कर दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऑल द टाइम दे विल बी कमिंग. Maybe from class 3 onwards or 5 onwards, parents might not be coming, and senior students उनके parents तो आते ही नहीं है बिल्कुल भी. But here they are quite concerned. There are a lot of complications. That is why I mean through you, I wanted to tell it to the people who will be viewing this episode, who have to start up with the preschools or have started. ये just people think कि मेरे पास जगह है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास पैसा है, तो हम प्री स्कूल चालू कर देंगे. You can start up a preschool, but you cannot run it if you have this mentality in your mind, because there are a lot of complications when you start up a preschools. It is not very easy. It is easy to start up a plus 2 school, but it is not easy to start up with a preschool. You have to have patience also. I tell you, one of my franchisees some 5-6 years back, one person took my franchisee for locality in Delhi, और वो 15 दिन बाद आएगा, सर मुझे बड़ी घबराहट होती है स्कूल में जाने में. मैंने क्यों? कहते बच्चे रोते हैं वहां पर. मैंने कहा हम तो बच्चों के रोने की आवाज सुनने के लिए परेशान होते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा रोए आकर यहाँ पर, तभी तो सेटल होंगे. आपके पास बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन आ रहे हैं, तभी तो वो रो रहे हैं. उनको सेटल करना ही तो प्ले स्कूल की ड्यूटी है. Ultimately he didn't survive, and we took back school from him, and we ran that school for some time and then franchise it to someone else. तो इसमें patience बहुत चाहिए आपको. Sir, I will share an experience with you that there is a preschool here in Kanpur. I won't disclose the name. They have a very good concept with the PG student, play group student. What they do is before the session they start up the classes around week or 10 days before. वो क्या करते हैं कि मदर को बुलाते हैं बच्चे के साथ शाम के टाइम पे, और वो कहते हैं 1 घंटे आप आइए, क्लास के अंदर बैठिए, बच्चे के साथ टिफिन लेके आइए कुछ भी, एंड टीचर विल बी देयर एंड द मदर विल बी देयर एंड द चाइल्ड शुड बी देयर फॉर 1 hour. 2-3 दिन ऐसे कराते हैं शाम को, फिर 2-3 दिन कराते हैं सुबह, एंड आफ्टर 5-6 days, आफ्टर अ वीक, they say the parent to stand out of the gate. If the child will cry, we will call you. The concept was the child goes to a person to whom who or she knows when she is of 2 or a 2.5-year-old. So they get the the child acquainted with the familiar with the teacher during this week. This was a very good concept. And the second thing, they don't call ma'am, they call auntie. The auntie. And that was a very, because ma'am means it's a very horrified. They get ma'am डांटेगी, ma'am मारेगी, so they get horrified. They don't want to go to the schools. But that school, I mean, these 2-3 things which I observed was very good. कि बच्चे को पहले सेटल करवाता है 1 हफ्ता मदर के साथ रूम में आने में, वो टीचर के साथ मिल के उनसे जान पहचान बन गई. तो इट्स वेरी गुड थिंग. इट्स अ वेरी गुड थिंग. I felt they should be adopted with all the preschools. Yeah, I also adopted in my school even. Most of the reputed preschools are doing like this only, mother toddler program. Yes sir. Sometime. वो Yes, sir. अलग बात है कि हमारे सिस्टम में आंटी नहीं बोला जाता. आंटी केवल हम लोग जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसको बोलने के लिए बोलते हैं. एंड अनदर थिंग इज we ask them to say ma'am only, because whenever the child move from preschool to 10+2 school, yeah, तो वो उनको वो पता होना चाहिए कि क्लास में जो टीचर पढ़ा रही है he is ma'am. So the auntie or ma'am is not a main thing. The main thing is that they allow the parent to come for 1 week. Yeah, that is mother toddler program. Toddler that is very good. Yeah. Now, So that is the most of the reputed schools are doing this. Yeah. I agree with Rato sir, and what you said also, because a lot of schools have, the name could be different. Like we call it me and mom, so we also kind of call the mother and, make her comfortable, because it is very important for her to be, for the mothers to be sure where they're sending kids. And interestingly,
while we called it me and mom, there were a lot of parents. The moms are working, the fathers are at home. So he said, ma'am, ये तो गलत हो गया, आपने me and mom रखा. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, we can write me and my father. That's no worry. That is for sure, ma'am. Because when they have their first child, so mama to gets more panicked rather than the child. Child is comfortable in playing in the school once he gets settled, but mama is always in panic and papa is also in panic. पता नहीं मेरा बच्चा school में क्या कर रहा होगा. So there are a lot of problems in case wherever in the families grandparents are there, तो हम तो ऐसे सीन देखते हैं कि grandparents दादाजी या दादी बाहर खड़े होकर रो रही होती हैं, बच्चा अंदर रो रहा होता है. This is a very general phenomena in preschool. I tell you, this is very general phenomena in preschools. दादाजी बाहर रिसेप्शन पे रो रहे हैं, बच्चा अंदर क्लास में रो रहा है. और कई बार ऐसा होता है बच्चा अंदर खेल रहा है मजे से और दादाजी लेकिन रो रहे हैं बाहर बैठ के. That's the love and bond between the grandparents and the child. But after a few days, they get habitual of all this, and then they feel, it's good. The child is getting when they listen to the poems and whatever the child is coming at home and telling, they are quite astonished and excited. कि यार इतना सारे मेरे बच्चों को एकदम से कैसे आ? This is the best about the preschools. Thank you so much, sir, for insightness. We'll come up to Mayank now. Mayank, as you have heard from ma'am also and sir also, there are so many problems. There are so many things which have to be kept in mind when you are dealing up with the preschool parents. Because you already told me that you take up sessions with the parents on Saturday, 7 o'clock, I think I told that. You tell them about the schools, you have a parenting session with them. So how do you satisfy the parents, especially the parents who are the first parents and they want to get their admitted in child in preschool? तो मैं ये बात कहूंगा कि पेरेंट्स इस समय सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं कि कौन से स्कूल में एडमिशन लें और कौन से स्कूल में ना जाएं. वो कहते हैं कि सर आप अपने बच्चा समझ के बताना कि कौन से स्कूल में आपका बच्चा होता तो एडमिशन कराते. सो दिस इज द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट आई गेट फ्रॉम पेरेंट्स एंड दे से कि सर आप क्या मतलब they always come to me and say like I have visited a lot of play schools before COVID. I give sessions over there उन पेरेंट्स को. तो दे आर कि सर इस स्कूल में कराएंगे तो क्या हो, क्योंकि अगले 15 साल डिसाइड होने वाले हैं. तो सैनफोर्ड स्कूल में भी जैसे सर को पता होगा कि सर के पास इतनी क्वेरीज आती होंगी एडमिशन के लिए कि सर कौन से स्कूल में मैं एडमिशन कराऊं, K-12 स्कूल में कौन सा स्कूल मेरे लिए ठीक रहेगा. तो बहुत सारे ऐसे 10 पैरामीटर्स होते हैं जिनको 10 तो कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, जस्ट मैं कहता हूँ कि 10 पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए बिफोर चूजिंग द राइट स्कूल फॉर आवर चाइल्ड. वन इज like whether you can afford fees of the school or not, that's very basic. And second is distance, कि आपके घर से वो स्कूल कितना दूर है, छोटे बच्चों को ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े. थर्ड आप ये देखते हो कि जो स्कूल है उसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे प्रोवाइड हो रही है, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज प्लस एकेडमिक्स वो कैसा है. अब कई फैमिलीज ऐसी होती हैं, मेरे पास एक पेरेंट आया कहता है कि सर मेरे को ऐसा स्कूल बता दो जिसमें मैं एडमिट कराऊं तो IIT में हो जाए मेरा. मैंने कहा सर ऐसी कोई मशीन नहीं बनी थी कि आप एडमिट कराओगे और आपको बच्चा IIT में निकलेगा. तो कई पेरेंट्स होते हैं जो सर आपका मंजू मैम के स्कूल में एडमिट करा दो, IIT में निकल जाते हैं बच्चे. हाँ ये बात तो सर ने सही कही है. मेरे IIT टॉपर निकलते हैं मंजू मैम के स्कूल से. तो मतलब हमारे स्कूल के बच्चे ने पल अग्रवाल हैज टॉप्ड फॉर द JEE मेंस, इंडिया की फर्स्ट टॉप 10 में है. तो हाँ कहीं तो ऐसे लोगों को मेरे पास भेज दिया करिए. तो मेरे को आपके स्कूल में आना चाहिए था फिर. तो Mayank, you can tell them we have one machine that Seth Haranam Jaipuriya School Basundhara. अरे नहीं, no machine, but yes, you know. We have a school where we can give you guarantee that the child will become an engineer. Whatever you want, the child will become for sure. We can give some guarantee. That's for sure. Amazing. That's good to hear. So मेरे को भी फिर आपके स्कूल में पढ़ना चाहिए था. मैं DC में रह गया, मैं IIT में हो जाता. Doesn't matter. ऐसा नहीं है कि जो IIT में जाते हैं they are the only one who are bright spark. Absolutely. You know, it is all about and everybody evolves also in life, Mayank. Absolutely. So nobody decides that I want to do this. I'm sure, like Rathore sir said, that he decided he was into computer, and then because of Kavita ji, he came into education. So sometimes things are destined, and you also as a person evolve and grow with, So it's learning all the time. So Absolutely. So zaruri nahi hai ki IIT has the best of the brain. So I kind of tend to differ from that.
Totally So, agree with you. I'm so Mayank, glad if you have missed studying in Sethananam, Jaipuria, Vasundhara, so when you get married, your kid should go over there at least. absolutely. I would love to And have if you are going to open up your school, preschool, then you should go up with Rathore, sir. No, I will correct you. If you want to send your children to Jaipuria, all my children in class 1 come from Sanford schools. So they first That's get the great. grooming in Sanford schools and then they come to me. So that's a route for me. Everybody has that pass or a route. So my route is that lot of my children come from Rathore sir's school. Yeah. Absolutely right. Amazing. You gave a very good idea, ma'am. That is the best idea. Everybody will be satisfied and your child will be in safe hands. And Mayank has to open his school, so he has to decide. Either he'll go. You can't open Jaipuria over there, Mayank, because ma'am is already there. So you can go up with then Stanford. It'll be much better you go for that, and sir will give you very good guidance over there. Right. I have heard Sanford World School भी Greater Noida में है. So बहुत सारे parents हमारे platform के ऊपर उस school के लिए inquiry करते रहते हैं. I think sir has recently launched it before COVID. Yes. Before Yes. pandemic, 2019 only, and that is I wanted to tell you that is also under the guidance of Manju ma'am only. But that school is really doing very well and it is really Yeah. picked up. It's really picked up. Yeah. We are Multiple getting very good response there. Yes. Yeah. So Multiple that is in Greater Noida. Yes, in Greater Noida. That's great, ma'am. My daughter is also there in Greater Noida, studying over there. So I'll tell her if your friends or your teachers want to admit your child in any school, so Stanford is the best one. Yes, it is indeed. Yes, sir. Ma'am, I'll come up to you again. Oh. Because you are a role model for many of us. Here also you're a role model for all of us. Because I also, if Rathore sir is inspired by you, to of course, so I am to quite inspired. मतलब आप दोनों के सामने तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. ये we are inspired. So what message as an educationist you will like to give it to the teachers? Because we all are teachers or administrators as a role model. How they should behave. I don't know. I mean, all I can say is that great things never come from comfort zones. अगर कुछ करना है तो उसके लिए अपने comfort zone से बाहर निकल के आना पड़ेगा. I think that is very, very important. And of course, to me, success is also about satisfying yourself. Like I said, I took this job, never took this as my job, but as my passion. So I think it is also about what you are doing. If it's satisfying you, then it is not it's not a work for you anymore. And and success is not about proving others that I've done this and that's the reason why I'm successful. So for me to share, that, but I can surely say that there you have to take stairs, when you want to reach on the height. Nothing comes. I mean, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. It's a lot of hard work, a lot of sincerity, integrity, vision that you should have for an organization. I think these are small elements, but they're extremely important. And if you're able to make the right blend of all this, ज़्यादा भी ambitious होना बहुत ठीक नहीं होता है. तो बहुत जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं वो आप satisfied हैं उससे, वो आपको अच्छा लगता है करने में, और प्लस एक डायरेक्शन तो जरूर होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए where you want to take your school or your organization. If you don't have a vision, then it becomes very, very difficult. And like I said, nothing comes easy in life. There are no free lunches. So you really have to work hard. And to work hard, you have to come out from the comfort zone. और education sector, राठौर जी देख ही रहे हैं, हम बात ही कर रहे हैं कि इतनी जल्दी इसमें बदलाव आ रहा है कि हम आराम से उस पर बैठ नहीं सकते हैं. आज अगर हमने कोई काम करा है तो पता लगता है कि वो 6 महीने बाद redundant हो गया. There is something new that we have to do. So it's an ever revolving. So आप अगर आपने ये समझ लिया as an educator कि आपको सब कुछ आता है, so I think that's the last day of learning for you. So and then you become stagnant. So for me, at this age of 60, I'm still learning. And today through this talk show, I've learned so much from Rathore ji, from Mayank, from you. So अगर आपकी सोच अच्छी है, खुली है और आप imbibe कर रहे हैं, I think learning never stops. Absolutely right, ma'am. Absolutely right. Absolutely right. Because you have to learn till the last breath you take.
You Yeah. learn from a small kid, a 2-year or 1-year child, even sometimes you learn from them also. And we should welcome it as an administrator or as a teacher. Teacher is also a leader when going into the class. Should take it positively with the kids. That is for sure, ma'am. Thank you so much, ma'am. Mayank sir, I'll come up. Rathore sir, I'll come up to you. Some people think कि लक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब मेहनत करना, कई लोग मेहनत नहीं करते, उनको बहुत कुछ मिल जाता है, दे गेट सक्सेस एंड ऑल. तो अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज यू आल्सो हैड वर्कड सो मच into this field, you had a hard time also and a good time also. So what do you say, that success is by luck or by hard work? This is a combination of both, I can say. See, I tell you the background what I had, the journey what I have traveled. It was not so easy to reach to this place where I am sitting today. See, I tell you, my father hardly did his primary education, and my mother never went to school. तो उनका लेकिन एक ही सपना था कि मैं अपने बेटे को हाईएस्ट पॉसिबल एजुकेशन देनी है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और जब when I decided to quit my job and enter into entrepreneurship, so nobody was there to guide me. Nobody was there. Even when I was doing my education also, तो मेरे पापा तो मुझे बता नहीं सकते थे बेटा कौन सा कोर्स करना है, मदर तो बता नहीं सकती थी. तो ये तब मैं ये कह सकता हूँ कि I was so fortunate because I was so close to teachers in school time and college time कि टीचर्स मुझे गाइड करते रहे. मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने समय समय पे मुझे गाइडेंस दी. तो इसको मैं अपना लक कहूंगा. मेहनत मैंने की, अपॉर्चुनिटी मेरे पेरेंट्स ने दी पढ़ने की, लेकिन गाइडेंस मुझे टीचर्स ऐसे अच्छे मिलते चले गए जो मुझे गाइड करते गए और मैं उनके हिसाब से आगे करता गया और मैं यहाँ तक पहुंचा. उसके अलावा आई टेल यू, जब आप सक्सेस हो जाते हो ना, आज मंजू मैम डायरेक्टर स्कूल्स हैं पूरे जयपुरिया ग्रुप की, नेशनल अवार्डी हैं. मंजू मैम कितने रातें नहीं सोई हैं सारा काम स्कूल का देखने के लिए, कितना ट्रैवल किया है, कितना प्रेशर लिया है. जब फी रेगुलेशन कमेटी का इशू आया तब कितना प्रेशर लिया है. नोबडी नोज इट. वो केवल मंजू मैम की सक्सेस देखते हैं, वो उनकी जो इतनी टफ जर्नी रही है उसको कोई नहीं देखता. स्ट्रगल्स भी बहुत होते हैं ना राठौर जी. स्ट्रगल्स भी बहुत होते हैं मैम. यस आई टेल यू, व्हेन वी स्टार्टेड सैनफोर्ड, तो हम तो हवा में थे. द मोमेंट वी रजिस्टर्ड द नेम सैनफोर्ड और फ्रेंचाइजिंग करना शुरू किया, शुरू के 2-3 फ्रेंचाइजी इतने इजीली मिल गए, हम तो हवा में उड़ने लगे थे. हमें लगा कि अब तो ब्रांड बन गए. लेकिन हुआ क्या कि साल भर में जितना हमने पैसा प्लान किया था इन्वेस्ट करने का, वो साल में पैसा खत्म हो गया. बिकॉज हमने नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड दे दिए, हमने एफएम में ऐड दे दिया, सब कुछ जो बड़े ब्रांड करते हैं वो किया हम लोगों ने, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था. हम इमीडिएटली जमीन पर आ गए. हमें समझ आ गया कि बेटा आपको पहले अपनी टेरिटरी में ब्रांड बनना पड़ेगा. यू नीड टू बिकम ए ब्रांड इन गाजियाबाद फर्स्ट, देन इन दिल्ली एनसीआर, देन एनीबडी फ्रॉम any other city will come to you to take your franchise. तो ये जो challenges टाइम पर आते हैं ये कोई नहीं देखता है. I think throughout my journey अभी तक मुझे लगता है अगर मैं सारे दिन काउंट कर लूं तो 1 साल तो निकल के ऐसा आएगा जब मैं नहीं सोया हूं. 365 दिन तो अभी तक की जर्नी में ऐसे निकल आएंगे जब मैं और मेरी वाइफ नहीं सोए होंगे. हम सारी रात बैठ के बात करते रहे, डिस्कस करते रहे कि हाउ टू ओवरकम. इवन अभी पेंडेमिक होके गया है, यू नो द काइंड ऑफ सिचुएशन वी ऑल हैव फेस्ड, जितने भी स्कूल वाले लोग हैं, और प्री स्कूल तो बहुत ही बुरी हालत देखी है. मेरे ख्याल से 10-20 दिन तो इस पेंडेमिक में भी ऐसे गए होंगे जब हम पूरी फैमिली नहीं सोए होंगे. हम चारों लोग, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वाइफ, सब लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे कैसे करना है, क्या करना है. तो ये जो स्ट्रगल है, ये जो टफ टाइम है, एवरी मंथ 30th को हमें टेंशन होती थी इनिशियली कि अब सैलरीज देनी है, कहां से आएगा पैसा. ठीक है, एक फ्रेंचाइजी अगर कभी भी कोई फ्रेंचाइजी नाराज ना हो जाए. हमारे फ्रेंचाइजी रात को 10 बजे भी मिलने आते थे तो हम मिलते थे. अब आज की डेट में मैं 6 बजे के बाद नहीं मिलता हूँ किसी से, बट 10 बजे भी कोई फ्रेंचाइजी मिलने आता था रात को कि 10 बजे वो उसके टाइम के हिसाब से मिलते थे. हम अपना टाइम नहीं देते थे, उनको दे ही नहीं सकते थे, चॉइस नहीं थी हमारे पास में. तो ये जो जर्नी होती है, इट्स नॉट सो इजी. अगर आप जो भी एक टीचर से भी प्रिंसिपल की पोजीशन तक भी स्कूल में पहुंचते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, एजुकेटर ही हैं,
that journey is also not so easy to reach to a position. और हम लोग जो स्क्रैच से स्टार्ट करके, कोई बैकग्राउंड ना होने के बावजूद, पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे, फाइनेंसेस नहीं थे, आई स्टार्टेड विद 40,000 रुपीज, आई सेव फ्रॉम माई सैलरीज, माई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड आई विद 40,000 रुपीज। केवल पूरी पूंजी जो मैंने अपने बिजनेस में लगाई वो 40,000 रुपए है, उसी से मैंने पैसा बनता चला गया, ऐड होता चला गया, वो अलग बात है। तो ये 40,000 रुपए से जर्नी शुरू करके आज माई ब्रांड वॉज वैल्यूड फॉर मोर देन 100 करोड़ रुपीज इन 2019। तो ये 2019 में जो 100 करोड़ की वैल्यूएशन से ज्यादा मेरे ब्रांड की हुई, वो 40,000 रुपए की देन है। 40,000 रुपए जो मैंने सेव किया, उससे जो मेरी जर्नी शुरू हुई, आज की डेट में कोई बिलीव नहीं करेगा ये बात है। और कितना स्ट्रगल झेला है हमने। बैंक के पास जाते थे तो कोई लोन नहीं देता था हम लोगों को, क्योंकि हमारे क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, हमारी रिटर्न्स इतनी हैवी नहीं जाती थी। आज की डेट में पैंडेमिक होने के बावजूद भी रोज मुझे बैंक से फोन आता है कि सर लिमिट और एक्सीड करनी है क्या, बताइए आप। एवरीबडी नोज कि बिजनेस अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, इवन देन बैंक्स आर रेडी टू गिव अस मनी। दिस इज द काइंड ऑफ क्रेडेंशियल यू विल मेक ओवर a period of time, just fighting the odds what you have faced in your journey. So this is the challenge. Luck सब कुछ नहीं होता, luck plus hard work plus determination. आपने कभी भी यू टर्न सोचा होता? मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपना कंप्यूटर वाला बिजनेस भी कंटिन्यू रखता और मैं कविता के बिजनेस को भी आगे एक्सपेंड करता पैरेलली। बट मुझे पता था कि अगर मेरे पास एक बिजनेस ऐसा रहेगा जो मेरा इजीली चल रहा है, तो मैं इस बिजनेस को कभी एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। यू टर्न नहीं होना चाहिए कभी भी। मैं सबको ये बोलता हूँ कि सक्सेस का पहला मंत्र है, यू शुड नॉट हैव एनी बी प्लान। प्लान बी होना ही नहीं चाहिए। प्लान ए बी सी डी सब कुछ उसी बिजनेस के लिए होना चाहिए। वो दो नाव में पैर रखने वाला काम हो जाएगा सर। हाँ, प्लान बी ना इधर के रहोगे, ना इधर के रहोगे, ना उधर के प्लान रहोगे। नहीं होना चाहिए, प्लान सी भी प्लान नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्लान ए। उसको कैसे सक्सेस करना है, यही इसी पर आपको प्लान करना पड़ेगा, इसी पे काम करना पड़ेगा, इसी पे सोचना पड़ेगा। आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा तो आपको कहीं से अरेंज करके फिर उसमें इन्फ्यूज करना पड़ेगा, बट उसी को सक्सेस करना है। जिद होनी चाहिए आपके अंदर किसी भी चीज काम को करने की। तो सर वी कैन से दैट नहीं है, आप अगर जिद्दी नहीं हो, इफ यू आर नॉट रिजिड कि मुझे ये हो जाए, मैं अगर हो गया तो कर लूंगा, ये वाला एटीट्यूड है तो कभी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे सर। तो हम हार्ड वर्क, स्ट्रगल को फेस करना और डिटर्मिनेशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। तो सर हम लोग ये भी कह सकते हैं, इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क तो सक्सेस अपने आप आ जाएगी। अपने आप कुछ नहीं आता। आई एम सो सॉरी टू टेल यू। नहीं, हार्ड वर्क से सर, हार्ड वर्क से नहीं, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। हां, हार्ड वर्क इंक्लूड्स एवरीथिंग। हार्ड वर्क इंक्लूड्स एवरीथिंग कि यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। तो करना पड़ेगा, पर साथ में आपको अपना ब्रेन भी यूज करना होगा, साथ में आपको डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क विद द डिटर्मिनेशन एंड विद योर ब्रेन, ये तीन चीज मिलकर ही आपको सक्सेस देगी। खाली हार्ड वर्क भी सक्सेस नहीं देगा। खाली आपने डिटरमाइन कर लिया, मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे 200 स्कूल खोलने में, अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, कैसे खोलेंगे? बिल्कुल। तो ये सब चीजें, और उसके लिए मैंने ब्रेन ही नहीं लगाया कि एक्सपेंशन कैसे होगा, कैसे इसको मार्केट करना है, कैसे मुझे फ्रेंचाइज बनाने हैं। तो इस सब का कॉम्बिनेशन मिलके तब आपका लक आपका साथ दे रहा होता है, अदरवाइज लक विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीजें आपने बताई सर, क्योंकि बहुत जरूरी है सबके लिए। इफ यू वांट, वी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो, व्हेन वी आर इन द स्कूल्स, इवन आफ्टर एवरी 1 minute we have challenges, every day we have so many challenges, तो we have to be very patient। वो कुछ नहीं हो जाएगा, this you do it like this, you do it like this। so teacher sometimes से सर आप कैसे कर लेते हैं, या मैम से भी पूछते होंगे, हालांकि मैम को तो बहुत ज्यादा आता मेरे से, मैम से पूछते होंगे मैम आप यू आर सो कूल। तो we have learned from educationists like मंजू मैम और many other principals कि आप कूल रह के आप कैसे डिसीजन ले सकते हो। कोई कूल नहीं रहोगे आप तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपने जैसे कहा कि हम लोगों ने 3-4 फ्रेंचाइजी दी, उसके बाद हम लोग हवा में उड़ने लगे, बाद में जब नीचे गिरे, तो अगर आप पैनिक हो जाते तो आपके साथ क्या होता, काम खराब था। यू हैड बीन पेशेंट, आपने सब्र रखा, आपने सोचा नहीं इसका रास्ता कैसे निकाला। तो दैट क्वालिटी हैज टू बी विद द एडमिनिस्ट्रेटर on any level, being an entrepreneur or being in the school, you have to take care of that कि आपको पैनिक नहीं होना है। बड़े से बड़ा पहाड़ सुना, you need to assess yourself time to बिल्कुल, time। assessment time पे हर स्टेज पे आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि
अब जैसे इजी स्कूल में अभी बताया कि फंडिंग आई है ना, फंडिंग आई, एक स्टेज आ गई, फंडिंग कम्स विद द प्रेशर। तो आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि मैं फंडिंग तो ले रहा हूं, पर एट व्हाट कॉस्ट। मुझे उनको एक कमिटमेंट के साथ लिया है मैंने फंडिंग, और वो कमिटमेंट भी पूरा करना है और अपनी ग्रोथ भी करनी है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको असेस करना पड़ेगा टाइम पर। असेसमेंट, यू आर द बेस्ट क्रिटिक ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने आप को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। एक कमरे में बंद करके बैठ जाओ और क्रिटिसाइज करेंगे। मैं अपना असेसमेंट खुद करता हूँ, मैं अपने आप को खुद क्रिटिसाइज करता हूँ। मुझे पता है मैं कहाँ गलत होता हूँ, मुझे पता है कहाँ मैं सही होता हूँ, मुझे पता है कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे पता होता है कि मुझे किस फ्रेंचाइजी के साथ कैसे डील करना। ये जब तक आप नहीं करेंगे तो एक लेवल पे आके धड़ाम से नीचे जाने में देर नहीं लगती। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है। चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गिरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस इफ यू वांट टू रिमेन देयर। ऊपर चढ़ने में तो टाइम लगता है, गिरने में टाइम नहीं लगता है। थैंक यू सर। We'll come up to Mayank because you have heard sir also and ma'am also. So now we like to know from you that because you are bridging up the gap between the parents and the schools. So the parents also might be having expectation from the schools also. So they might be asking you इस type का school बताओ कि वहाँ पे ये हो. So what are their expectations actually? Sure, absolutely. So before answering the question, जो राठौर सर ने कहा कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, तो जब मैंने कॉलेज पास करा था तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि मेरा बिजनेस तू ज्वाइन नहीं कर सकता। मेरे पास जॉब थी अमेजोन में, ओयो में, आई हैड सम ऑफर्स फॉर एचडी। सो उस समय मैंने सोचा कि मतलब उस समय वो ऑफर्स नहीं करे और इजी स्कूलिंग को ही कंटिन्यू करा। सो प्लान ए भी इजी स्कूलिंग था, प्लान बी भी, प्लान सी भी। और बाय गॉड्स ग्रेस इन लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ दिस थिंग विद राठौर सर टोल्ड, अब our company is valued more than 50 CR. So this is something that is required absolutely. And Rathore sir is a wonderful motivational speaker. He has motivated me. So मुझे लग रहा है मैं 3 रातें नहीं सोने वाला और काम करने वाला हूँ। तो thanks a lot sir for your such kind words and motivating me more to work more hard. तो जो सर आपने बोला, क्वेश्चन जो पूछा कि एडमिशन सीकिंग पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं स्कूल से। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस जो पेरेंट्स की मुझे आती है काफी अलग अलग तरह की आती हैं। कोई कहता है कि मुझे एक बैलेंस चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट में, कोई मुझे कहता है मुझे एकेडमिक्स पे ओरिएंटेड स्कूल चाहिए, कोई मुझे कहता है स्टूडेंट टीचर रेशियो इतना होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है सेफ्टी की, कि हमारा बच्चा सेफ है या नहीं है उस स्कूल में, रेलिंग कैसे है, रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रिंसिपल कैसे हैं, एकेडमिक्स कैसा है वहाँ का, एजुकेशन मैनेजमेंट कैसा है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आजकल पेरेंट्स स्कूल से एक्सपेक्ट करने लगे हैं। But I think there should be a balance between expectations and aspirations, and we should only expect things. जो अभी क्या हुआ है कि मतलब value for money is absolutely fine, but parents are expecting कि बहुत, मतलब दिल्ली में मैंने specifically ये देखा है कि वो बहुत ज्यादा expect करने लगे हैं स्कूल से, जो मतलब एक्चुअली में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में। सिर्फ स्कूल सब कुछ नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल, ये तीनों एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स हैं, बीच में स्टूडेंट है जो कि एक होलिस्टिक ग्रोथ करेगा। अगर हम ये सोचे सिर्फ टीचर्स और स्कूल्स ही सब कुछ कर देंगे तो वो गलत है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड वी शुड वी एज पेरेंट्स शुड प्ले इक्वल रोल इन डेवलपिंग देयर holistic development, like all their motor skills and all their skills, parents should have the equal contribution in it. But there are certain parents who have in their mind कि हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया, we have paid the fees, the whole responsibility of the schools. So there you should in your sessions go up with the parents that it is not, because you should already, you are saying you have to guide them that there is a triangle, because without your support the school also cannot do this. Absolutely. Right. We'll come up to Manju ma'am again. Yes. Manju ma'am, we like to know from you that because you are a source of inspiration of many. So what is your success mantra? All right. So if I could say success mantra is to understand the organization. See, for a principal to first of all, of course, like I said, when you start a school, it is very, very important to have a market intelligence,
where of the area and the area that you're catering to. And like to add over here, it is very important to understand what your consumer and customer are, like Rathore ji said. And for me, my success mantra, if I could say that, I do a very close self-assessment of myself, and I keep checking myself, am I aligned to the vision of the management? Because end of the day, if the principal is not aligned with the vision of the management or vision of the parent or the vision of the student, then it becomes you kind of moving in so many directions and you're not able to reach anywhere. And for me, I do a lot of, I believe a lot in strategic planning also. कि भाई मुझे ये करना है तो मुझे उसके लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए then I take a parent into consideration, I take my teachers into consideration, I take my management. So सबको एक ही उस पे align होना चाहिए. Then only you can drive the school where I have driven this school. Of course it takes, and patience, because for any school you need to understand that a gestation period for any school is about 6 to 7 years. तो एक sustainability for a principal, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जब मैं कोई प्रिंसिपल्स के लिए इंटरव्यू करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रिंसिपल बहुत जल्दी अपनी जॉब चेंज कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जब तक स्कूल को समझ पाएगा, it takes about a year for anybody to understand the school, and then after 1 year you start putting your thoughts together. So I think that is very, very important. Alignment, according to me, and strategic planning, have an action plan, how you're going to move ahead, I think is extremely important. And hard work, like I said earlier, also for me, my hard work paid me, and where I've positioned myself today is all because of my hard work, strategic planning, moving in right direction, and God's grace, if I can say that. Absolutely right, ma'am. Because if you are not aligned, if you are not focused, and for the sake of growth or money, you are moving from one place to another, it shows that you are not doing justice to the schools. It takes at least 1 year to understand all the things, or the understanding of the school. The nitty-gritties of a school, or you have to understand that every school has its own culture, every school has its own flavor. ठीक है ना? तो हमको वो फ्लेवर खराब नहीं करना है ना, हमको उस फ्लेवर को और एनहांस करना है या स्ट्रेंथन करना है प्रोसेस को. I think that's what is important. Right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Rathore sir, I'll come up to you now. Yes. Sir, we had been seeing that so many people, they have started up with the preschools, maybe along with you or before you, but they haven't got this success. You are having 250 plus schools, numbers might be more than this. So what is the success mantra according to you as an entrepreneur? Yeah, so as I told you earlier also, preschool or school or education, any educational institution needs entirely different approach. यहाँ मतलब कोई भी educational institutions run करने के लिए, this is not like any other business, I tell you. This is an institution, and you need to understand, you have put in your hard-earned money to build a preschool or a 10+2 school or any other institution. You need to give good services. You need to produce good children, बच्चों को जो आना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट जो नॉलेज होने चाहिए, जो उनके अंदर मैनर्स होने चाहिए, जो उनके अंदर स्किल्स होने चाहिए. इफ यू आर डूइंग दैट करेक्टली, आई टेल यू, मनी इज बाय प्रोडक्ट इन दिस बिजनेस. आपको पहले दिन से, आई हैव नेवर मेड एनी बैलेंस शीट ऑफ एनी स्कूल बिफोर स्टार्टिंग. कोई प्रोजेक्शन नहीं होते मेरे कि कब कितना पैसा इससे प्रॉफिट आएगा. मेरा केवल सिंपल कैलकुलेशन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर आई शुड अचीव एंड व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल एंड चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट लेवल वुड बी देयर. अगर आप बच्चे की स्किल्स डेवलप कर रहे हो प्री स्कूल में पेरेंट्स बच्चे को क्यों भेज रहा है? प्री स्कूल में वो इसलिए भेज रहा है कि जो पहले जॉइंट फैमिलीज में
बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, अपने सिबलिंग्स के साथ में, नेफ्यूज के साथ में सीखते थे, वो नहीं सीख पाते बिकॉज अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। एक बात। दूसरी बात, नाउ एवरीथिंग इज साइंटिफिक। अभी सब कुछ तो साइंटिफिक है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि बच्चा 6 साल की एज तक जो सीख लेता है वो पूरा जीवन कैरी करता है। तो जब साइंटिफिकली ये प्रूव है, हमारे टाइम पे ये सब रिसर्च नहीं थी, अभी साइंटिफिकली जब प्रूव हो गया तो वी नीड टू टीच देम साइंटिफिकली। हमें वो एक्टिविटीज प्लान करनी होती हैं, हमें वो सिचुएशन क्रिएट करनी होती हैं। स्टोरी टेलिंग इज नॉट सो सिंपल टुडे। पहले जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरी सुनाया करते थे, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वैसे स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। तो अभी स्टोरी टेलिंग, राइम्स एंड ऑल दैट सब कुछ बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से प्लान होता है। तो किसी को भी अगर प्री स्कूल खोलना है तो उसको एक डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी कि वो ये ना सोचे कि ग्रोसरी शॉप खोलनी है, मिल्क बूथ खोलना है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है। तो उसमें तो आपको पता है कि ये 2 साल के अंदर मैंने इतना पैसा लगाना है, 2 साल के बाद या 1 साल के बाद मेरी ये आरओआई आनी शुरू हो जाएगी। यहां पर आपको प्री स्कूल के केस में आपको ये प्लान करना पड़ेगा, आई एम इन्वेस्टिंग दिस मच ऑफ मनी, I will work to get these number of admissions and I will work for these children so that next batch तक मेरी पॉपुलैरिटी इतनी हो जाए कि प्रॉफिट्स के बारे में सोचने की आवश्यकता ना पड़े। I tell you, in my schools where I am sitting, वसुंधरा में हम लोग कभी बात नहीं करते प्रॉफिट्स की। हम कभी सोचते नहीं है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही जो हमने ग्रेटर नोएडा में 10+2 स्कूल शुरू किया है, आई टेल यू द काइंड ऑफ एडमिशंस वी हैड ड्यूरिंग पैंडेमिक, नो अदर स्कूल इन ग्रेटर नोएडा, यू नेम एनी बिग ब्रांड हैड। किसी में भी इतने एडमिशंस नहीं आए हैं जितने एडमिशंस हमारे स्कूल में आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। उनको पता है कि ये कंपनी ऑन्ड स्कूल है, ये राठौर साहब का स्कूल है, तो व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इन हिज स्कूल दे हैव। तो कल्चर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा सो दैट पेरेंट्स को ये पता हो कि दीज पीपल डोंट वर्क फॉर द मनी, दीज पीपल डोंट वर्क फॉर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आएगा, कौन लेकर जाएगा आपसे। तो इसके लिए स्कूल के लिए, प्री स्कूल के लिए डिफरेंट अप्रोच चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप, आई टेल यू, व्हेनेवर वी स्टार्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो पहले से पता होता है, हमें पहले से पता होता है कि ये हमें एक्स अमाउंट पड़ेगा, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये हमें सपोज 10 रुपए का पड़ रहा है, हम इसमें 20% प्रॉफिट ऐड करके 12 का बेचेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आप एक फीस डिसाइड करते हैं और उस फीस से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन द प्रॉफिट एंड लॉस यू कैन कैलकुलेट। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। आप मार्केट, जिस मार्केट में स्कूल खोल रहे हैं, लाइक द काइंड ऑफ फीस यू विल हैव इन कानपुर, द काइंड ऑफ फीस यू विल हैव रूरल एरिया ऑफ कानपुर वुड नॉट बी द सेम, है ना। तो आप वहां की आरओआई और आपके सिटी कानपुर की आरओआई अलग होगी। मेरी गाजियाबाद, आई हैव 18 प्री स्कूल्स इन गाजियाबाद इटसेल्फ। 18 में मेरी फीस जो है वो 2200 रुपया ट्यूशन फीस से लेके और वो 4500 रुपया ट्यूशन फीस तक है गाजियाबाद में ही। तो ये स्टेटिस्ट आप नहीं चेंज कर सकते। आपको जो भी प्री स्कूल खोलना चाहता है, इवन आई टेल यू, जो स्कूल भी खोलना चाहता है, उसको ये अप्रोच लेनी पड़ेगी कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टाइम। दिस इज नॉट ए ग्रोसरी शॉप कि आज मैंने 2 रुपए की कोई चीज खरीदी, 2.25 की, इसको कल बेच दूंगा, मुझे 25 पैसे प्रॉफिट आ जाएगा या मेरी कैपिटल वापस आएगी। नो, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू। अब जयपुरियाज ने इतने सारे स्कूल्स बनाए हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस भी हैं, वहां जो लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा लग गया वो तो लग ही गया ना। वो तभी उसमें से आना शुरू होगा जब वो नंबर्स बढ़ेंगे, और वो नंबर तब बढ़ेंगे जब आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होगे। So you need to focus on the quality, you need to wait for the numbers to come, then the profit will come automatically. So this is what you mean, sir, that you need to have patience in when you are coming up with the education field, as well as the education business is entirely different from the other or regular business. That is for sure. Yes. So this is also a drawback with many of the management, sir, in India, कि उनको लगता है कि हमने पैसा लगाया है, को हमें 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर रिटर्न मिलना चाहिए। It is a preschool. business नहीं है. This business is not for Lala people. But every management is being said as Lala business. It's a Paniya business,
and all the people who have invested, they want, because they have come up from other business and they have money Immediate funds. return नहीं आती है इसमें. You cannot expect immediate return in this business. But this is a drawback in India, sir. बिल्कुल. Institution you are building for the generations. आप ऐसा नहीं है कि कोई भी 10+2 स्कूल की अगर बात करूं तो अगर वो मिस्टर चंडोक ने शुरू किया है तो वो उनकी अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन, वो उससे अगली जनरेशन, अगर वो इंटरेस्ट लेके उसको चलाएंगे तो वो करते चले जाएंगे. बिल्कुल. एक फैक्ट्री चल रही है, हो सकता है वो फैक्ट्री अगली जनरेशन ठीक से ना चलाए, बंद हो जाए. बट स्कूल के केस में इफ यू हैव एनी गुड प्रिंसिपल लाइक मंजू मैम, तो वो स्कूल चलता रहेगा. सर मैं भी प्रिंसिपल हूं नो नीड ऑफ प्रमोटर टू कम. सर मेरे से भी चल जाएगा सर. आई एम आल्सो प्रिंसिपल सर. आई नो मैं तो मंजू मैम को बहुत जानता हूं. ऑल्दो जो सीखा मैंने भी मंजू मैम से ही सीखा सर. तो कोई भी, मेरे कहने का मतलब है, कोई भी अच्छा प्रिंसिपल अगर आपके स्कूल में है तो इवन आई टेल यू इन माय स्कूल आल्सो, मेरे ख्याल से महीने में 2 या 3 बार जाता हूं मैं ग्राउंड. मेरे घर से आधा घंटे की ड्राइव पर है, मैं 2 या 3 बार जाता हूं. प्रिंसिपल ही चलाती है. बिल्कुल सही है सर. So there is no need of anybody from management to go to school every day. Sir, in Jaipuria there was zero interference of management with me, and when I came to this school, the management was coming every second day when I joined. But it is a time now कि management sir 5 से 6 बारी भी साल भर में नहीं आती है. So you need to build up that confidence. So we need to understand. Yeah, we need to understand that in education sector, it is also about a lot of trust that we build among each other. It's the trust Yes, that a parent has when he puts a child in a school, a trust that a child has with the teacher, the trust that the teacher has in the principal and the principal. So it's in a school, since we are dealing with a human resource, we need to understand that end of the day, every parent is interested in their own particular child. मेरा बच्चा स्कूल में गया है तो क्या मेरे बच्चे में desired change है जो मैं देखना चाहता हूँ. And if they fail, why do the parents change the school? They change the school because they have joined a school or taken admission in a school with some kind of an expectation. And like I said earlier, they do a market intelligence. आजकल तो you do a lot of Google search, get into the reviews. हम तो एक होटल भी बुक करने जाते हैं तो पहले देखते हैं कि लोकेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और जब आप होटल में जाते हैं तब आपको पता लगता है नहीं यार वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा नहीं है, food was not so good. So which is equally important, your building and your infrastructure can attract a parent. But for some time only. A customer at once. Yeah, but later on it is soft skills, and it is, and actually the brand building of any school, it is not by creating a huge hoarding. Yes, ma'am. Hoarding is only Yes, to ma'am. What do pass you on say? information. It Yes, is ma'am. from word of. It is from word of mouth, and a parent will only speak highly about the school if he sees a desired change in their own children. So I strongly believe आप कितने hoardings लगा लीजिए, कितना भी brand building exercise कर लीजिए, पर अगर आपका parent जो दूसरे को कहता है कि नहीं, my child is in Jaipuria and I'm very happy with the way they are doing, I think that is actually brings so many children to that particular school. So I think that's absolutely important. right, ma'am. Absolutely right. What you say, normal businesses after sales service. If you are satisfying the parents, as an admin also, we had to see that you already said, ma'am, very rightly that it takes 1 year for the management to understand you, for the parents to understand you, for the kids to understand you, as well as on your level. It also takes time for 1 year to understand the management, the teachers, as well as the students and parents also, for sure. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'll come up to Mayank now. So Mayank, as already you told us that we have talked that you bridge up the gap between the parents and the schools. So how do you coordinate? Like you come up with the schools, they associate with you, told, and you also take sessions. How do you do with the parents also? So how do you, how do you make them together? So it is totally through our website. So it is a tech-enabled platform. We are a product-based company. So all the parents come at our platform and they are able to see all the virtual tour, images, facilities, everything about the school on our platform.
and then they can apply to that school online only. Like they don't need to visit the school now. So they can apply, they can fill the application form. So it's a single application form going into multiple schools. So like if you want to select multiple schools, you can shortlist multiple schools, fill that form, and your form will be automatically submitted to all the schools. I totally agree with Manju ma'am and Rathod sir. It's the word of mouth that is the foremost and the best marketing strategy, I would say, that any school should have. The happiness ratio or the satisfaction rate of a parent. So if the parent that is studying in your school is happy, then he will be the brand ambassador and he will be telling to 10 other parents कि आप इस school में admission लो. So even at Easy Schooling, we try to satisfy each and every parent who is landing at our platform. They are able to choose the right school with the help of our portal, and they are able to get their school. तो जो Easy Schooling की website पे आके apply करके admission लेके जाता है, they are so much satisfied कि after 4 years even I get messages कि सर आपके प्लेटफॉर्म की वजह से हमारा स्कूल में एडमिशन हो गया था और अभी हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, and we are really happy with the guidance and the support that has been provided. So that is something that is we are doing through the website of Easy Schooling. That's great. Mayank, you're doing a very wonderful job. And when we see at you, we feel that if you had been in our school, you would have been our student. So when we see, personally, when I see young entrepreneurs like you doing a very different thing, it feels very good. And we wish you all the best for your success. And we also wish you that you should move this trend to the whole of India. Because there are Pune, Bangalore, Hyderabad, Kolkata, and Bombay in last month. We already have 20 schools each in those cities. So we were initially based out of Delhi NCR. In last month, we have launched in 5 cities straight away. So we are moving very aggressively pan India. So taking inspiration from you, Chandok sir, आपने बोला pan India जाओ, तो एक महीने के अंदर हमने 5 cities में launch कर दिया है, and we are there to help parents around the country now. That's great. We wish you all the best because you are doing a wonderful job, and because there are many misconceptions between the parents which they have about the schools. उनको लगता है कि school वाले तो बस लूटने के लिए बैठे हैं, but they don't understand that. And I had a word with you, and I had been knowing that what questions do come up from the parents too, and how you are, the misunderstanding of कैसे हम उनके अंदर हटा रहे हैं. That's a very good thing you're doing. Wish you all the best for your future, and of course, for sure you'll reach pan India. Thank you, sir, Rathod sir, for giving so much your prestigious time. And we are very grateful for you. Manju ma'am, thank you so much. It was pleasure having you on the show. Had a great time with you, and hopefully we'll meet again. And for sure, you said before January you will come up to Kanpur, and of course you will inform Rathod sir also, Surely. because sir will also plan up for the same thing. Yes, and we'll come together. We'll come together. Pleasure is mine, ma'am. I'll be the host. And we will sure for me. Yes, of course. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Namaskar. Thank you, ma'am. Namaskar, sir. Thank you so much Namaskar. for sharing the screen. Namaskar, sir. And wish you all the best, ma'am. I totally believe you will do the wonder in the market. Thanks a lot. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. All the best. Bye-bye. Thank you. Bye, ma'am.